Good morning, students. So, in today's history period, we are going to discuss about our new topic, that is new crafts in the city. Okay. So, the lesson name is in the earlier city. In that, there is our next point, new crafts in the city. So, just see the page number 28. Okay. So, you have seen there are some pictures. We'll discuss about the same picture. So, see that what they said here, there is one cube shaped picture that is called a stone weights. Okay. And the other two pictures are jewelry, we can say ornaments, and a stone blade. Okay. So, see here, the objects that were made and found in Harappan cities, most of the things that have been found by the archaeologists are made of stone. Okay, these all the ornaments made of stone, shell and metal. Also including copper, bronze, gold and silver. Okay, so copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Okay, and that gold and silvers were used to make ornaments and vessel. So about stone, let me explain. So the basically stone is used for a weight. हम जिसको बोलते हैं ना कि वज़न करने के लिए अब हम जो वेइंग मशीन्स यूज़ करते हैं वो दैट टाइम दे वर यूजिंग अ स्टोन एंड व्हाट दे डिड दे हैड गिवन अ पर्टिकुलर परफेक्ट शेप. Okay, that is a cube shape or a rectangular shape. These were made of a chert, a kind of stone. These were used to weight precious stone or a metal. So, mudra असं त्याला आपण म्हणूया. Okay, so these were probably used to weight, जो वजन करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था. Now about the beads. So many of these were made out of carnelian and a beautiful red stone. The stones was cut, shaped and polished. And finally hole was bored through the center so that is a string could be passed through it. So you can see the red stone was used for ornaments, and the shape was given perfectly, beautifully, and also उन्होंने होल वो स्टोन को होल निकाला है उसमें, ताकि वो अच्छी तरह से उसको थ्रेड की तरह यूज़ करके अच्छे सा एक ऑर्नामेंट्स बना सके. ओके, ऑर्नामेंट्स लाइक अ बैंगल्स, बीड्स, नेकलेस, rings etc. made of gold, silver, bronze and even of terracotta have been found at excavation sites. Okay, this also shows that people were aware about the this various metal. Okay, understood. Now stone blade, the third picture is about the stone blade. This stone blade they use for a hunting. Understood. The Harappan also made a seal out of stone. These are the generally rectangular and usually have an animal carved of them. Okay, so the Harappans also made pots with a beautiful black design, such as you can see on the page number 6. So you can see the development in that कि उन्होंने कैसे किस तरह से पॉट भी बनाए थे. So let me tell you about the pottery. So the pottery of different shape, size and design have been made from these sites. Okay, it is found in that the pots were made by earthen pots. Okay, the mud. This shows that the people had mastered the art of making good quality of pots. Then they have been decorated with the geometrical and figurative designs. They were first glazed in the heart and were then they used. Okay, so here you will understood that कि उन्होंने स्टोन का किस तरह से इस्तेमाल करना सीखा. उन्होंने उसका यूज़ वेट की तरह यूज़ किया. उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी, उसके बाद फॉर हंटिंग दे
ब्लेड उसके बनाए, ठीक है. सो दिस इज द what we say development in their occupations. Okay, so now our next point is crafts of the Harappan cities. So talking about the crafts, see, so the artwork on the pots and many other items made of beads, stones, metals have a variety of colors and textures, which convey that the craftsmen were quite good and well skilled. So the pottery made of terracotta has a reddish color and with a design in a black. Just I told that you can see the pottery. There is a design in a black color. So the artwork on the pots and many others items made of a bead, stone, metals. They have a variety of colors and textures. Understood? Now one more thing here I want to tell you that about clothing sense. Okay, so cloth making. So here you can see the statue of beard man excavated from the Mohenjo-daro. So this is the statue of a man. So what they said here, the cotton was probably grown at Mehergarh from about 700 years ago. Actually, the piece of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at the Mohenjo-daro. Archaeologists have also found the spindle wars made of terracotta and the faience. These were used in a spine thread. So you can see here, archaeologists have found the evidence that the people made cloth from the cotton. They finding a spindle, and spindle wars shows that the thread was being made from the cotton. Small piece of a cloth that indicate that the cotton was used, and the art of cloth making was prevalent. A stone statue of a man was found from the Mohenjo-daro, which shows that the wearing a cloth with the embroidery of flower. So they have the sense of a cloth, the art. Okay, so the statue, those who wore that cloth, you can see on that कि एक अच्छे से उन्होंने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है. तो कॉटन का भी उन्होंने शोध किया था उसके ऊपर, क्लोथ का भी. फर्स्ट व्हाट दे यूज टू वेयर, ओके, वो एनिमल्स के स्किन पहनते थे, उसके पहले वो लीफ पहनते थे, बाद में उन्होंने कॉटन की खोज निकाली, उसके बाद उन्होंने कपड़े की खोज निकाली. ओके, सो द एम्ब्रॉयडरी क्लोथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम द Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. Understood about the cloth making? Also here I want to tell you that many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who trained to do only one kind of work. For example, cutting stone and polishing beads or a carving seal. So जैसे कि हर एक के एक अपनी खुद की एक स्पेशलिटी होती है. यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि वुमन और मैन ही स्पेशलिस्ट थे. ओके, सो ये किसने वर्क किया था ये हम नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते कि वर्क वॉज डन बाय whom, मैन और वुमन. अंडरस्टूड? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट faience. I want to tell you, here I forgot to tell that a material called faience was used to make a jewelry. Okay, got it? Here you can see the page number 29. The bluish color part I am going to explain you now. The unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificial produced. Okay, so faience is an artificial paste which was used to shape sand or powder quartz into the desired object. The object made with this material were glazed and got bluish green color. ये एक प्रकार का faience was used to make a beads, bangles, earrings and tiny vessels. ये एक
प्रकार का जो ग्रीनिश कलर का जो पत्थर रहता था उससे वो बैंगल्स और कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते थे. गॉट इट. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज okay, now we will be discussing about in search of raw material. Okay, so terracotta toy and sealware shows that goods were carried from one place to another. Trade also developed during this period. Okay, so in a search of raw material, here we are going to see that the trade were developed in during that period. So talking about the trading, so from the way things have been discovered, it is believed that the trade also developed during the period. It may have started in the form of barter and gradually developed into a proper trade. So some common seals have been found in a different cities within the Indus Valley civilization, and even from those from Mesopotamia. This shows that goods were exchanged between the different locations. Weighing scales, weight and measures found from that time also this except of trade. In the Lothal district of Gujarat, a huge site has been excavated which appears to have been used as a dockyard, where vessels sailed from across the sea to dock and trade took place. Okay, so all things these findings confirm that the people were involved in some sort of trade during those times. So here you can see a raw material are substance that are either found naturally, such as wood and the metal. So produced by the farmers or herders, these are then produced to produce finishing goods. For example, the cotton produced by the farmer is a raw material that may be produced to make a cloth, while some of the raw material that the Harappans used were available in a locally. Many times, many items such as a copper, tin, gold, silver and a precious stones had been brought from the distant place. So here I want to tell you that कि उस ज़माने में ट्रेडिंग शुरू हुआ था. आप जो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, टेराकोटा जो टॉय है वो किसका टॉय है, वो किस प्रकार का है, तो वो एक बुलक कार्ड का टॉय है. और बाजू में जो वो सील दिखाई गई है मैंने, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि उस सील के ऊपर एक बोर्ड का पिक्चर है. एम आई राइट? सो उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने ट्रेडिंग डेवलप किया था. तो डॉकयार्ड किसको बोलते हैं कि जहाँ पे शिप बोट रुकती है और वहाँ से गुड्स लोड होता है और अनलोड भी होता है. ठीक है. सो क्या क्या है वहाँ पे ट्रेडिंग चलता था, तो कॉपर, ब्रॉन्ज, टीन brought from the present day in Afghanistan and Iran. Also copper, they got copper from the present day in Rajasthan and even from the Oman in the West Asia, from the West Asia, and gold present day in Karnataka we have got. Understood? So however goods carried from one place to another. Understood? Okay. So trading भी ऐसे अच्छी तरह से उनका शुरू हो गया था. उसके बाद का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़. सो फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, सब्सक्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़. द फार्मिंग एंड द कैटल हर्डिंग रिमेन द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि फार्मिंग एंड द कैटल हर्डिंग रिमेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड हैड इनफ सरप्लस सो एज अ स्टोर देम फॉर द फ्यूचर यूज़. ओके. सो उन्होंने क्या करना शुरू किया था, उन्होंने
क्रॉप ग्रो करना वो सीखे थे, उसके बाद फिशिंग करना सीखे थे, उसके बाद उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल मीन्स हंटिंग करना। उसके बाद वो जो भी वो उन्होंने सीखा था उसको वो स्टोर करना भी सीख गए थे। ओके, द प्रेजेंस ऑफ टूल्स लाइक अ प्लो, उन्होंने एक पिक्चर में खुदाई करते समय हमें एक टॉय प्लो मिला है। ओके, सो उससे पता चलता है कि आई डोंट नो कि वो यूज़ करते थे कि वो एक सिर्फ टॉय ही था। ओके, देयर इज़ एविडेंस दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड द आर्ट ऑफ टैमिंग एंड रेयरिंग कैटल, गोट, शीप अलॉन्ग विद द डॉग्स एंड पिग्स। ओके, सो वो जो एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग करते थे। पहले के ज़माने में पैसे तो थे नहीं। ओके, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया था कि आप मुझे ये मटेरियल दो, इसके बदले में आपको मैं वो मटेरियल देता हूँ। ठीक है, सो दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, बेर, कॉट्स, फिश, दे कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। दिस रीजन डज नॉट रिसीव अ हेवी रेनफॉल। वो टाइम पे वो जो एरिया में उतनी ज़्यादा क्षमता में रेनफॉल नहीं होती थी। सो सम फ्रॉम द इरिगेशन मे हैव बीन यूज्ड। ओके, तो जहाँ से उनको म्हणजे आपण म्हणतो की नाही की ती भटकी जमात झाली होती, जिथे पाणी मिळेल, जिथे अन्न मिळेल तिथे ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती जायला लागले होते। आणि काही ठराविक ठिकाणी जर मुबलक प्रमाणात पाणी असेल तर ते तिथे सेटल पण होत होते। ओके, सो understood about the food for the people in the cities. Now a closer look Harappan towns in Gujarat. So मैं आपको एक इमेज भेजने वाली हूँ, आप वो जो देखो, जब मैं लाइव लेक्चर लेने वाली हूँ तब आपको वो इमेज भेज दूँगी। वहाँ पे पूरी लोथल की इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, उसको आपको पढ़ना है। लोथल के स्टडी बोल के मैं एक इमेज भेजने वाली हूँ वाइल टेकिंग अ गूगल मीट। उसमें उसके बाद आप पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ो तो आपको वो जो लोथल इज़ अ वन ऑफ द साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, उसका जो है वो उसके बारे में पता चलेगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द क्लोजर लुक ऑन हरप्पन टाउन्स इन गुजरात, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ साबरमती रिवर in Gujarat. A dockyard at Lothal, this is a huge tank, may have been a dockyard where boats and ships came in the form of sea and through the river canal. Okay, the goods were probably loaded and unloaded here. I told you, you can see in the picture in your book. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टैंक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे बोट आती थी। ओके, कहाँ से आती थी? सी रूट से आती थी और अदरवाइज़ रिवर कैनल के थ्रू आती थी। यहाँ पे जितना भी गुड्स सप्लाई होते थे उतराए भी जाते थे और यहाँ से वो लेके भी जाते थे। अंडरस्टूड? सो जस्ट रीड दिस पेज। ओके, सो व्हाट इज़ द डॉकयार्ड? अ प्लेस वेयर बोट्स एंड शिप्स कुड कम टू द शोर एंड लोड और अनलोड गुड्स। गॉट इट? ओके, now about seal and sealings. So what do you think mean by seal and sealing? आपने कभी सुना है कि अरे हे सील केलेलं आहे? ओके, आता हे कसं ओपन करायचं? तर लग, just listen. Seal may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. Okay, the impression of the seal is known as the sealing. So here I want to tell you this process of sealing is used even today while sealing a parcel in the post office. Okay, so यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सील किसको सील करते हैं। अभी आपके घर में ऑनलाइन से आप बहुत कुछ मंगाते हो। ओके, तो वो पैकेट्स ऑलरेडी ओपन होते हैं कि सील होते हैं? येस, एम आई राइट? येस, यू आर राइट, वो बंद होते हैं। ओके, अभी हम सेलो टेप से और
कोई अदर मटेरियल से वो बंद कर देते हैं. पर पुराने ज़माने में एक प्रकारची लाख होती रेड कलरची, यू कॅन सी हिअर इन दिस पिक्चर. तर त्या लाखेने ते बंद केलं जायचं. ओके, एखादं जर पार्सल असेल तर ते बंद करण्यासाठी त्या लाखेचा यूज केला जायचा. ते गरम करायचे, वितळवायचे आणि नंतर मग ते स्टॅम्प करायचे. ओके, म्हणजे जेणेकरून जर ते ओपन केलं तर ते कळायचं की हां हे तुटलेलं आहे किंवा हे ओपन केलं गेलं आहे. आत्तासुद्धा जे एक्झाम पेपर बंडल्स असतात किंवा काही पोस्ट ऑफिसमध्ये असे खूप इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स असतात, त्यांना त्या सीलचा अजूनही वापर केला जातो. अंडरस्टूड? ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ द मिस्ट्री ऑफ द एंड. ये कैसे ख़त्म हो गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे पता चला कि ये इसी तरह से ये ख़त्म हो गया. ये जो जे हरप्पन आता आपल्याला सिव्हिलायझेशन सापडलं होतं ते पूर्ण संपण्यामागचं कारण काय आहे. तर सम स्कॉलर सजेस्ट दॅट द रिवर्स ड्राईड अप, डिफॉरेस्टेशन्स. ओके, मग हे का? काहींचं म्हणणं आहे की पूर्ण रिवर सुकून गेल्या किंवा जे ते कॅटलिंग करायचे तर मग गोट काऊना जेव्हा चरायला पाठवायचे तर ते जास्त प्रमाणात त्याचा वापर झाल्यामुळे ते झालं असावं. काहींचं म्हणणं आहे की त्यावेळेस जगण्यासाठी किंवा इंधनासाठी फ्युएलचा वापर जास्त व्हायचा. तर फ्युएल वॉज रिक्वायर्ड फॉर अ बेकिंग ब्रिक्स अँड फॉर अ स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स. ओके, म्हणजे कॉपर, गोल्ड किंवा ब्रिक्सचा जेव्हा त्यांनी शोध लावला होता तर ते भाजण्यासाठी किंवा त्याचा जास्तीत जास्त आगीचा वापर ते करत होते, म्हणून त्यांनी जंगलं तोडायला सुरुवात केली असं असावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. ग्रेझिंग बाय अ चार्ज हर्ड्स ऑफ कॅटल शिप्स गोट मे हॅव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. ओके, जस्ट मी सांगितलं की जो कॅटल करते ते म्हणजे गोट आणि शिपला ते असं चरायला पाठवायचं आहे तर त्यांनी ते एवढं मोठं असं म्हणजे ग्रीनरी जास्त प्रमाणात त्यांनी खाऊन टाकली असेल असंही त्यांचं म्हणणं आहे. सो द स्टडी ऑफ द रुइन्स ऑफ दिस civilization was carried out by the archaeologists and historians. They have observed that the civilization probably came to an end around 3900 years ago. हे किती वर्षापूर्वी झालं होतं तर 3900 years ago. They have not been able to find the exact reason for the sudden end of this flourishing civilization. Okay, they don't know the exact reason of the ending of this civilization. It is guessed that there may have been massive flood which could have led the drainage system and collapse and cause the whole region to be buried under mud. Some scholars believe that the river dried up and a large scale deforestation took place. Maybe it's happened, we don't know actually. So they feel that the inhabitants needed fuel and for making a bricks and smelting copper as well as the other metals. जस्ट मी तुम्हाला सांगितलं की त्यांना कॉपरचा किंवा ब्रिक्सचा वापर ते जास्त प्रमाणात करायला लागले होते, म्हणून त्यांनी ॲज अ फ्युएल म्हणून लाकडं तोडायचा प्रयत्न केला असावा. ओके, सो हाऊएवर दिस डज नॉट एक्सप्लेन द complete wiping out of the civilization in the entire region. It thus remains a mystery as to what brought an end to this civilization. Okay, okay, understood? So after that we are going to see that elsewhere. Okay, now we'll discuss about the pyramids. Okay, so find Egypt in your atlas. So if you have the map, you can check out that the location of that Egypt and their pyramids. So most of Egypt is a dry desert except for the lands along the river Nile. So Egyptian civilization came up along the bank of the river Nile in Africa. It is famous for its monuments. So colossal temple, pyramids and the its enormous phoenix. These are the two pyramids. Okay, the mystery surrounds its origins and its religions and its monuments.
So you can see the pyramids are the only remaining wonder of the 7 wonders of the ancient world. So दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से ये इजिप्ट के जो पिरामिड्स है वो भी एक उस इंक्लूड होता है. So around 5000 years ago king ruled over Egypt. These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. They also built a huge tomb known as a pyramids. ये जो आप ट्रायंगल का जो शेप देखते हैं उसको पिरामिड्स बोलते हैं, उसको टोम बोलते हैं. ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस. दे ऑल्सो when they died, the king died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. Okay, so these carefully preserved bodies are known as a mummies. जो किंग्स की जो दफनाए गए बॉडीज़ रहते हैं उनको ममीज़ बोला जाता है. A large number of objects were also they buried with them. These included food, drinks, clothes, ornaments, utensils, music instruments, weapons and animals. Sometimes even surviving men and women were buried with the rulers. Okay, so यहाँ पे ऐसे उन्होंने बताया है कि जब वो किंग्स को दफनाते थे तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ वो अंदर रखते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, वेपन्स है, यूटेंसिल है, उनके ज़रूरत का पूरा सामान वो उसमें रखते थे. ओके, सो सी it is said that the Egyptians believed that the body and the souls were important to human existence in a life and in also in a death. Okay, उनका ये कहना था कि ज़िंदगी में और मरने के बाद भी ये दोनों चीज़ें वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे. ओके, so understood. So you just read this paragraph with the and you just see the images, pictures. Okay, bye, have a nice day. We have completed our lesson. Now you have